Welcome back. Yet another case of VIP arrogance has come to the fore. And surprisingly, it's at a toll booth once again. This time, of course, it's coming in from Maharashtra. These are MNS Cadre who allegedly go ahead and beat up the toll staff. And the reason, of course, is not surprising. Here, one of their beloved leaders stopped at the toll plaza, which they think is completely uncalled for and unwarranted. Now, the cadre belonging to Raj Thakray's MNS went on a rampage at a toll plaza here in Nashik after their party chief's son, Amit Thackeray's vehicle was stopped by the staff here. Now, the workers went ahead and even vandalized the toll plaza, broke the glasses with, weapons that they were carrying, which are rods and sticks is what we can see, and also what we are learning from the police. Not stopping there, the cadre even attacked the toll plaza staff. Instead of apologizing here, the MNS chief's son bragged about the goon-like behavior of his party workers. Amit Thackeray said that under his father, 65 toll plazas were closed in a similar manner, and he is very proud to add yet another one to the tally, he says. First, let's listen in to this reaction coming in from the MNS chief's son. मी त्यांना बोललो की आमचे माझे सहकारी बोलले की तिकडे फास्टॅग आहे तुमचं वर्क नाही ते वगैरे तर ते बोलले आमचे काहीतरी इश्यूज आहेत आणि जरा बोलायला ॲरोगंट होते. त्याच्यानंतर त्यांनी एक 10-15 मिनिटं गाडी थांबवून ठेवली आणि सोडली. मला वाटतं त्या टोलला कोणातरी कळलं असेल कोणाची गाडी आहे. तर टोलनी मला वाटतं सिन्नर किंवा नाशिकला कोणातरी कळवलं आणि मी हॉटेलला पोचल्यावर मला कळलं की टोल फुटला. त्याच्यामुळे मला तर अशी घटना झाली ती. मी साहेबांमुळे एक 65 टोल नाके बंद झाले, माझ्यामुळे अजून एक ॲड झाला. Well, when you have an incident like this break out, you can definitely expect politics around it, especially in Maharashtra, of course, which has been so politically active over the last few weeks. And we've heard some sharp reactions that are coming in, and some politicians even defending this action. Let's listen into these reactions. से का ये हमेशा रवैया रहा है कि टोल के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन छेड़ा, क्योंकि आज मन से कहा राजनीतिक पटल पे अगर हैं तो नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं के पिताजी का ये पूरा ये है, उनकी नीति है, शायद मुझे नहीं पता, पर इस तरह से कोई भी तोड़फोड़ करके दादागिरी करके और उसका समर्थन अगर कोई कर रहा है तो वो उचित नहीं है. नेता ने नहीं करना चाहिए. कार्यकर्ता ने किया, समझ सकते हैं, वो भी जस्टिफाइड नहीं है. तोड़फोड़ बिल्कुल जस्टिफाइड लग रहा है, नहीं दिख रहा है. लग रहा है क्या, ये दिख रहा है. ये मैं फिर एक बार कहूं कि ये शाहू फुले अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र, इसमें कभी भी ऐसा नहीं था. कभी भी ऐसा नहीं था. हमने इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, 95 में बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था. ये जो सत्ता का नशा में ये कुछ भी हम कर सकते हैं, इस तरह से चल रहे, इसे लोकतंत्र नहीं कहते. We're joined by Rai Sheikh from Samajwadi Party. Sir, we have seen how the toll booth was vandalized by MNS workers. In fact, the statement yesterday made by Amit Thackeray that my father closed around 65, one more I did, then what's the big deal? It just reflects what is the situation of law and order in this state. Maharashtra, which used to pride itself that we are number one in law and order situation, now is facing with this situation. If you are with the government, you can do anything that you want. So this is the message that the government is giving, that if you're with me, go do whatever you want. It's a really, really sad state for Maharashtra, a state which is number one in investment, in law and order, quality of life. So, we're just seeing deterioration, and this is one more incident which tells us that where we are going. In fact, no FIR has been registered, and also allegations are leveled that, the friendship of Raj Thackeray and our Home Minister is very close. So that's the reason being said that no action will be initiated. And this is the proof of it. I mean, and if there is no FIR means we want lawlessness, we want such kind of incidents. It's really bad, and I think we should condemn it at all levels. Now, for all the viewers, of course, who are tuning in, the numbers, of course, have been flashing on your screens where you can dial us. Talk to us about, this sort of an arrogance that, of course, probably you've witnessed in the past, you've seen in different parts of the country. We've already had a couple of callers who've tried to connect to us. Let's try and connect back to them. P. Kumar from Chennai, I believe, is still on the phone line with us.
Mr. Kumar, we've seen this very recently here in Karnataka, some of the MLAs being stopped at the toll plazas, them creating ruckus, later coming and demanding that we want a separate lane. Here you have, them vandalizing, a toll booth. This is infrastructure to which, we pay as taxpayers, we pay, and, it's built. And, who is anybody here? Because you belong to a particular family which is well connected to the political circles. Does it give you the right really to go and destroy property? Yeah, very good evening, Deepak. How are you? I'm thankful to you for taking Mr. my Kumar? call. And please, yeah. Can you hear me? Am I audible? Go ahead. Yes, loud and clear. Yeah. So thank you so much. So please allow me, I can speak in Marathi also, but let me reply it in Hindi so that all the Maharashtra people and entire India people can understand. ये लोग इतने drunk with power हैं, and his father Raj Thackeray is a serious offender, आपको पता है ना? They don't know कि ये जो टोल प्लाजास और टोल जो बना है, इससे पूरे भारत पे एक पूरा नेटवर्क बना सड़कों का, और वो सड़कों का नेटवर्क हमारे पैसों से ही बना और हम ही उसको यूज कर रहे हैं. और यदि हम इसको पे नहीं करेंगे और जिस तरह से उन लोग वेंटिलाइज कर रहे हैं, ये सिर्फ शो करता है कि कितना ड्रंक विद पावर है उन लोग, और वो कोई क्रेडिट नहीं है. अरे आप जरा एक बार यदि बैलेंस शीट उठा के देखो तो जो रोड की कंपनियां बनती है, इनको कोई बैंक पैसा नहीं देता. सो जो ये बीओटी एन्युटी बेसिस पे जो एग्रीमेंट होता है, उसी के ऊपर इनको पैसा मिलता है, तब हमको ये अच्छी रोडें मिलती है ना. और दूसरा, मेरे को 1 मिनट और दीजिए. राज ठाकरे का मैं जरा बताता हूँ कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया के अगेंस्ट में भी जो बोला, दीपक यू विल बी एप्रिशिएटिंग, जब नॉर्थ इंडिया के लोग यहाँ से आटा लेके गए, तब महाराष्ट्र में देखा लोगों ने कि अरे ये गेहूं होता है, ये आटा होता है, नहीं तो वो भाकरी बनाते थे. एंड इट हैज सेव्ड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटायर महाराष्ट्र, क्योंकि 1 एकड़ चावल में 45 लाख लीटर पानी लगता था और गेहूं में सिर्फ 3000 लीटर. तो आप देखिए, जिस नॉर्थ इंडियन के अगेंस्ट में राज ठाकरे ने नफरत फैलाई, आज यदि उन लोग विड्रॉ कर दे, पूरा बॉम्बे का सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा. ये पॉलिटिशियन लोग जो भी इस तरह से लॉ इन हैंड होता है, मैं सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल कोर्ट को बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सुमो मोटो कॉग्निजेंस ले और 3 साल के लिए इनको अंदर करे, बिना बेल भी ना हो इनका. तब इनको समझ में आएगा कि ये लोग जितना ड्रंक विद पावर है, और ये वेंटिलाइजेशन बिल्कुल बंद होगा. थैंक यू. Right, Kumarji. धन्यवाद कॉल करने के लिए and to share, of course, those views and very valid points that Mr. Kumar made. We also have Captain Jagpal. He's calling us from Rohtak. Captain, go ahead. What are your thoughts about what we see on our screens right now? Good evening, Deepak. I'm also fortunate. My call is through. My point is, this is not VVIP syndrome. Here is a man who has been the right-hand man of Bala Sahab Thackeray, who can make the Bombay shiver, make it shiver in summer, whether it is language, whether it is any other issue, the North Indian issue. They take the law in their own hand and they thrash like this. Now, what is this brat doing? The saying is, your son will not listen to your advice, but he will follow the footsteps. Laws are like cobwebs meant for small insects, not for goons like them. And if you think Maharashtrian government will take any action, then I want to tell you, in mammals, once you surrender before someone, the present chief minister was nowhere in hierarchy when Raj was the right-hand man. He dare not take any action. As it happens in a marriage, once you surrender in mammals, you can't raise your voice. Thank you, Deepak, for giving me my time. Right, Mr. Jagpal, the point here is not just the vandalism that we are seeing, then justifying the vandalism. Now, in fact, for all the people who are watching and looking at this sort of vandalism on your screens, you can share your thoughts and views. The numbers are flashing on your screens. Before, of course, we take more callers, we have Mr. Varun Singh, political analyst, who's joining us. Mr. Dilip Cherian, the founder of Perfect Relations, also right now with us on the broadcast. Let's take in a couple of questions from them. Mr. Singh, when you look at an incident like this, while, of course, we can talk about it as a VIP behavior, bratish behavior, but, he goes on to justify it, says, my father did it, and, I am only following the legacy. It's that sort of a statement that's coming in. I have covered Maharashtra politics for 2 decades and have personally met Raj Thackeray on several occasions when I had to go and cover his PCs. This doesn't, this actually is something that
we have been talking about for the last 2 decades, especially when it comes to MNS. And because MNS is an offshoot of Shiv where something of this sort has been happening for a very long time, that is another reason why people, if it would have been in a civil society, we would have seen a lot of people coming on the streets and objecting to whatever has happened over here. But what we see over here is nothing beyond just a social media reaction. And the attitude that Amit Thackeray showed while he was talking to the press is clearly he nowhere is remorseful that something has happened, and he, instead of asking his men to not vandalize public property for which we, the common public, have paid, instead it was like as if some trophy has been won by vandalizing the toll booth. And if you see, the Maharashtra police has actually acted. If you go through Times of India article that clearly says that Nasik rural SP they are registering an FIR, and not only that, they have also come out with a statement that when Amit Thackeray's car, which he was using over there, okay, let me quickly bring in Mr. Cherian as well. Mr. Singh, let me bring in Mr. Cherian as well. Mr. Cherian, we were just talking about how he's justifying it. There's no remorse at this point in time. Even if you think that, you want to take your fight to the toll plazas or against the entire concept of it, this is not the way you do it. You don't vandalize public property. Deepak, my anxiety is at a different level. As a citizen, I am concerned that if you start acting against toll plazas, who will build your roads? Roads are built based on the fact that there will be a revenue coming from them. This is not built on taxpayers' money. It is built out of private money, and these PPP companies operate on the basis that there will be a collection. So whether it is in Punjab, whether it's in Haryana, whether it's in Maharashtra, the really big issue is politicians have to figure out whether citizens will get the kind of infrastructure they need and that they demand if you don't allow the regular and methodical collection of tolls, taxes, etc. Can you imagine this situation and what its implications are for companies who will be invited to stay with us? Because we believe that this is a mindset. When you go ahead and you stop at the toll plaza, when you go ahead and allow your cadre to vandalize it, then come back and justify it, well, it's not just about this particular issue. It's about probably the VIP mindset. And we've not just seen it in Maharashtra today. Now we have another incident that's coming to the fore from a Punjab MLA. This is Amolak Singh, seen misbehaving with the Chandigarh police. Now, the MLA's sense of entitlement and somewhere the boorish behavior came to the fore after the police personnel was seen asking the AAP MLA to move his car from the no parking zone. Now, the MLA believes, well, he's entitled. The police are not supposed to tell him that this is a parking zone or a no parking zone. It is, of course, the police that will set rules on the road, but it does not mean that they can probably tell the MLA is the attitude that we are really looking at. Now, while, of course, the police personnel asked him to move the car, the MLA here has responded to the cop saying that, do you know who you're talking to? He says, I'm an MLA. Now, the cop, of course, at that point in time, somewhere kept his cool, said, I'm on duty. The MLA again there tries to snatch the police officer's phone, prevents him from recording the entire incident. Meanwhile, Congress MLA from Punjab, Pratap Singh Bajwa, has even tweeted this video, questioned why no FIR has been registered. Let's listen in to what exactly transpired there. ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਕੇ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਸਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਬੋਲਿਆ क्या बोलना ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਰ ਸਰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਕੇ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਸਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਬੋਲਿਆ Mr. Cherian, we've seen what happened in Maharashtra. Well, take a look at, Punjab here.
And more importantly, the Aam Aadmi Party takes pride in simplicity. You have Mr. Kejriwal, of course, who came to power riding on the wave of simplicity, saying we will not be corrupt, we will be simple, our priorities will be children and, providing good education, good health care. Now you have an MLA, throwing his weight around, saying I'm an MLA. How can you, being a police officer who's on duty, question me? I'm above you. Is this the attitude that we need to really look at from our legislators? Acceptable, and whosoever it is must be brought to book. Again, the same theme goes that if you have rules, if you have parking zones, no parking zones, these are all now the new methods of revenue. And bad behavior, arrogance, and the ability to take the law or the lawkeeper into their hands is brazen and absolutely unacceptable. I'm sure that Mr. Kejriwal has the ability to take cognizance of it, and he should act to make sure that the signal goes out to all his MLAs that this is totally unacceptable. That is the price you pay for being in government. You have to make sure that your flock keeps the rules. Well, I'll bring in Mr. Varun here. We were expecting another caller, of course. Before that, I'll bring in quickly Mr. Varun. Varun, when you look at this sort of behavior come in, at least we should commend the job that's done by the police officer there, who of course says that, well, I'm on duty, and whether whoever you are, I will perform my duty. But you can see him even try to snatch that individual's phone there. One thing I would like to also add over here, had it been a common man, the same police wala would have snatched him, dragged him to the police station and put him behind the bar. Why? And here you can clearly see another police wala pacifying the MLA, saying that, oh, wait, don't do anything, don't say anything. See, both are to be blamed. We have Mr. Amolak Singh himself, the MLA himself, joining us on the phone line. I'd like to interrupt Mr. Varun Singh. Mr. Amolak Singh, if you could tell us what is this behavior that we are really looking at? This is a police officer, trying to do his job. Yeah, sir, but मैंने कोई उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया. जब हम वहां से जा रहे थे तो उन्होंने हमें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप उनके फोन को खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं. आप is this something that's expected out of an MLA? मैंने बिल्कुल भी फोन खींचा नहीं, मैंने फोन नीचे किया था. आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप बोल देना. मैं जब वहां से जा रहा था, उन्होंने गाड़ी रोकी, हम रुक गए. तो इसी के दरमियान उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो. तो मैंने बोला कि हम अपने काम से जा रहे हैं कहीं, आप गाड़ी चेक करो, हमारे कागज चेक करो. तो इतने में मेरे गनमैन ने बोला कि MLA ज्यादा है. तो उसका बताने का रीजन ये था कि मतलब थोड़ा सा अच्छे तरीके से बात हो जाए. तो इतना कहने के बाद ही वो मतलब जो कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी थे, जब एक पुलिस ऑफिसर किसी सिटीजन से बात करता है और आपसे बात करता है, तो डिफरेंस क्या होती है? आपको लोग इलेक्ट करते हैं, तो लोगों से भी आपसे जिस तरह बात होती है, लोगों से भी ऐसी ही बात करना चाहिए पुलिस ऑफिसर को. जो उसको बताने की क्या जरूरत है कि आप MLA हैं? क्योंकि रूल्स तो आपके लिए भी वही अप्लाई होता है जो मेरे लिए और दूसरे लोगों को अप्लाई होता है. सर वही होता है, हमारे लिए भी रूल अप्लाई वही होता है, लेकिन उनके बात करने का तरीका थोड़ा सा रूड हो रहा था. तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि ये प्रोटोकॉल के तहत अच्छे तरीके से बात की जाए, ना तो वो कुछ बोले ऐसा, ना मैं कुछ बोल पाऊँ. तो उसी की वजह से उन्हें बोला गया था, जस्ट और इसका कोई और कारण नहीं था. तो इतना उन्होंने जब बताया तो वो पुलिस कर्मचारी भड़क गए. तो उन्होंने बोला फिर क्या हुआ, बहुत MLA है, ये है वो, इतना करके वो साइड पे चले गए, बोलते गाली वगैरह देते. और दूसरे जो मुलाजिम थे, कर्मचारी थे, उनको मैंने बोला कि आप डॉक्यूमेंट चेक करें. इशू क्या था सिंह जी, आप बताइए कि इशू क्या था? फर्स्ट पुलिस ऑफिसर ने जब आए उधर, और आपको क्या बताया उन्होंने कुछ नहीं. उन्होंने पूछा कि किधर जा रहे हो. मैंने कहा सर हम इस तरह काम से जा रहे हैं, अपने अगर कोई कागज
हमारे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, गाड़ी चेक करनी है, कर लीजिए। तो इतने में उन्होंने बोला वो देखते हैं। तो मेरे गनमैन ने बोल दिया MLA साहब हैं, तो वो इशू कुछ नहीं था, वो इस बात पे भटक गए। तो क्या हुआ, ये है MLA है, ये है वो है, मतलब करने लग गए। तो इसमें में दूसरे जो वहाँ पे कर्मचारी थे उन्होंने आके मेरे पास बोला कि सर इनका BP तो बढ़ जाता है, हम अपोलोजाइज करते हैं, आपके गाड़ी ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट भी ठीक है, आप जा सकते हैं, हम इनसे बात कर लेंगे। तो ऐसा बात लेकिन हुआ था वहाँ पे। अमलोक जी, अभी बीजेपी डिमांड कर रही है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो मतलब निजी अटैक करने के लिए है, और मेरे को लगता नहीं है इन बातों से कोई पंजाब का भला होने वाला है। या देखिए अगर ऐसा कुछ तंज कसना भी है तो इस पे कसिए कि कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि पंजाब सरकार ने ये पंजाब काम की है। भलाई के बारे में तो आप बात गलत कर रहे हैं, तो किया है। आपको ये भी सोचना होगा कि आप किस तरह बिहेव करते हैं एक पुलिस ऑफिसर के साथ जो अपना ड्यूटी कर रहा है उधर, सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहा है। आप पहले तो बता रहे हैं कि उसको पता लगना चाहिए कि मैं कौन हूं, कि मैं MLA हूं। मैं आप सिर्फ आपसे यही बात पूछना चाहता हूं कि क्यों पता लगना है कि वो आप MLA हो या नहीं हो, क्योंकि वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, वो दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। उसको उधर प्रोटोकॉल फॉलो करने की नौबत नहीं है, उसको सिर्फ वहां पर नो पार्किंग जोन में पार्क नहीं करना है, वो सिर्फ वो आपको रूल बता रहा है बस। सर आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लेता हूँ, आप बोल लीजिए। आप कुछ और कहना चाहते हैं सर? नहीं, अब आप बता दीजिए कि क्या डिफरेंस है। और जब बीजेपी बोल रही है कि FIR भी दर्ज होनी चाहिए, तो आपका इसके बारे में क्या राय है? मैंने सुन लिया है, मैंने आपकी बात सुन ली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक पंजाब में किसी लीडर ने, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली, किसी ने ये कहा है कि पंजाब सरकार ने ये फैसला जो है पंजाब के लोगों के खिलाफ लिया या ये गलत काम किया। वो सिर्फ इन्हीं चीजों में अपनी सियासत ढूंढ रहे हैं कि इन पे निजी कभी बोल देते हैं कि ये लोग शादियां कर रहे हैं, कभी बोल देते हैं इनके पास मोबाइल है, कभी बोल देते हैं ये मोबाइल चार्जर वाले MLA बन गए हैं, कभी बोल देते हैं ये कैसा मटेरियल है, कभी बोल देते हैं ये कैसे इन्होंने गाड़ी ले ली। तो इन बातों से पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पंजाब के अच्छे मुद्दे उठाओ ताकि पंजाब का भला हो सके, तो ये निजी अटैक करने से पंजाब का कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला। तो मैं तो यही कहूंगा कि राजनीति करनी है। पंजाब की भलाई के बारे में हम इसीलिए आप लोगों को चूज किया है और इलेक्ट किया है क्योंकि आप भलाई करो, लेकिन पुलिस ऑफिसर से इस तरह बिहेव करो, ये तो लोगों ने सोचा नहीं था ना। आप MLA होकर भी ऐसा ही बिहेवियर होगा। क्या आप अपोलोजाइज करेंगे ये पुलिस ऑफिशियल को? क्या आपको लगता है कि गलत था? शायद उनका फोन दोष साबित कर दिया अपने आप से ही। तो मेरी बात भी सुन लीजिए, मैंने उनसे कोई मिसबिहेव नहीं किया। मैंने सिर्फ उनको यही बोला कि बात करना है, अगर आप लोग हमसे बात ऐसे करते हो तो आम लोगों से कैसे बात करते होंगे। ओके, आपको लगता है कि जब आपने उनका फोन को हटाया वो सही था? तो देखिए कई उन्होंने पहले, मेरे को ऐसे लगा जैसे वो डिस्टर्ब है किसी बात से। पहले उन्होंने मोबाइल निकाला। मैं एक चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, मैं कोई क्रिमिनल, गैंगस्टर या कोई वारदात करके वहां से भागने वाला थोड़ी था। मैं तो वहीं पे रुका हुआ हूँ। तो उन्होंने पहले मोबाइल निकाला और 3 बार गाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। तो मैंने तब भी उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, इस बात की आपको क्या जरूरत है। तो उनके जो साथ वाले कर्मचारी थे वो बोल रहे थे सर सॉरी, ये इनका BP बढ़ जाता है, कोई बात नहीं, हम इनसे बात करते हैं, आप जाइए। तो फिर भी मैंने उनसे प्यार से बात करके समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे। ठीक है ना? ठीक है सिंह साहब, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वेल, दैट वाज द MLA वी आर ऑफ कोर्स लुकिंग एट ऑन आवर स्क्रीन्स, who of course even joined us just now live explaining what exactly happened. Now the viewers of course who've been listening to that conversation and of course saw the video can judge for themselves exactly what transpired. Well, with that, it's a wrap on this edition of the Bulletin. On the other side, the urban debate with Shreya coming up. Don't go anywhere.